Now, after protesters have paused their Dilli Chalo march for about a week, today this is slated to resume. Meanwhile, Union Agriculture Minister has stated, and I quote, that the government does not have an immediate plan to resume talks with the protesters, but it will find a solution rather soon. Meanwhile, the protests are being spearheaded at the Shambu and Kanori borders, and the protesters have announced a series of demonstrations until a decision on the government's next move is made. Meanwhile, protesters have been staying at the borders, and of course they will resume their protest and demonstration today itself. Joining me on the broadcast are a host of my colleagues, including Arzu Seth from Tikri border, Anil Chaudhary from the Ghazipur border, and Mahendra Mahi from the Noida Chilla border. I'd like to go across to my colleague Arzu first. Arzu, we have seen high-octane developments earlier during the Dilli Chalo march when it was active for about 2 weeks. There's been a lull in between, and of course we are in fact getting to know that the protests are slated to resume. How is the situation like on the ground today? There was a lot of heavy barricading in Tikri over the last few weeks. Can you show our viewers around? Well, Spia, as you rightly mentioned, that there was a heavy barricading that were established here at the Tikri border, but right now I would like to show you the visuals. Currently also you could see how, number of barricades have been placed here on the roads, and also cemented barricades have been made on the side of the road with the heavy police force deployed. You could see paramilitary forces standing, our rapid action forces also on their duty to make sure that the law and order should be remained, law and order maintained in the national capital, and farmers should not enter the national capital, as they announced that they will be holding the Delhi Chalo march on 13th of February. But that was put on hold, and today marks the important day, as the announcement will be made today for what further course of action they are going to take, and what will be the next step of the farmers, whether they will begin their Delhi Chalo march from today itself, or they will hold the talk with the government. As far as the government is concerned, the government is saying that they are ready to hold the discussion with the farmers. Already they had a 4 round of meeting with the farmers, but there seems to be no conclusion regarding the demands that the farmers are placing in front of the central government. As far as the demand is concerned, the farmers are asking the law on MSP, and there are several other demands regarding the farmers, regarding the agriculture. So this remains to be seen what step today the farmers are going to take as far as this border is concerned. As of now, you could see, vehicular movement is just normal here. Both these stretches of the road is open now, and the commuters are allowed to move from the national capital to the Haryana border. If you see, this is the border which connects Delhi to Haryana and Haryana to Delhi, and if you enter this border, this is the Haryana border. Welcome to Haryana, it is also written here. So the administration, the Haryana administration, has also made all the preparation to make sure that the law and order will maintain in the national capital, in the border areas. So this remains to be seen what step, what further course of action does farmers are going to take today. Yes, Pia. Indeed, we can see, but there is a lot of commotion behind you, even as there seems to be about 1 lane open for commuters to pass through. Earlier, of course, there were in fact reports coming in of people facing a lot of issues regarding especially transfer to medical facilities due to the traffic jams and the border closures and the blockades that were taking place. Movement to and from Delhi was earlier not possible, but there seems to be a slight respite, but there does seem to be heavy traffic on the ground. Meanwhile, joining us on the broadcast from the Ghazipur border is my colleague Anil Chaudhary. Anil, things seem to be looking a little better around you. Traffic movement seems to be a little more smooth and a little more seamless as compared to Tikri border. Can you show our viewers around? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब जब किसानों द्वारा कॉल की गई कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जो भी डेट रख दी जाती है उस दिन जरूर जो है काफी लंबा जाम जो है गाजीपुर बॉर्डर पर देखा जाता है।
फिलहाल की बात करें तो ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो सड़क है NH9 है, और उसके जस्ट बराबर में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। जिस तरीके से ट्रैफिक आपको जाता हुआ दिख रहा है, तो ये तो स्पष्ट है कि जो ट्रैफिक है वो चल रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी, पर उपद्रवी यदि दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। साथ ही गाजीपुर बॉर्डर ये वो जगह है जहां पर 1 साल से ज्यादा धरना प्रदर्शन चला था। तो यही चीज एक बार फिर नहीं दोहराना चाहते हैं। कोई भी प्रदर्शन एक बार फिर ना हो, कोई लंबे समय तक कोई आंदोलन ना चले, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने मल्टी लेयर बैरिकेटिंग यहाँ लगाए गए हैं। धारा 144 लगा दी गई है। बोर्ड पर तमाम ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं, उस पर साफ तौर पे लिखा गया है यहाँ धारा 144 लगी है और आप यहाँ पर कोई भी प्रोटेस्ट और या कोई आंदोलन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ना आप यहाँ बैठ सकते हैं। इस तरीके की बातें साफ तौर पे लिख दी गई हैं, जिससे कि चेतावनी दी गई यदि कोई भी व्यक्ति 4 से ज्यादा व्यक्ति खड़े भी यहाँ हो रहे हैं तो उनको पुलिस जो है अपने साथ ले जा रही है, उनको समझा रही है, समझाकर उनको घर भेज रही है। तो आप समझ सकते हैं प्रोटेक्शन लगातार है दिल्ली के लोगों के लिए, लगातार दिल्ली पुलिस काम कर रही है। दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है यदि कोई भी बस के द्वारा यदि किसान बस में बैठ, चुकी कुछ इनपुट ऐसे आए थे कि जो किसान हैं वो बस के द्वारा दिल्ली के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसको लेकर बसेस को भी चेक किया जा रहा है। मल्टी लेयर जो है बैरिकेटिंग लगाए गए हैं, क्योंकि अभी किसान और सरकार के बीच में लगातार जिस तरीके से बात चल रही है, अभी शांति बनी हुई है। कोई भी अभी हंगामा उस तरीके का नहीं है, ना अभी किसानों के द्वारा दोबारा से भी कॉल की गई है। हालांकि गाजियाबाद में जो किसान हैं उनकी तरफ से अभी कुछ दिन पहले जब कहा गया था कि हाईवे को एक साइड से जाम करेंगे, तो वो चीजें जरूर देखने को मिली थी गाजियाबाद में। पर वैसे यदि गाजीपुर बॉर्डर की या तमाम जो गाजियाबाद के दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर हैं, यहाँ पर जरूर शांति बनी हुई है फिलहाल। All right, and also to give us further perspective as to what is exactly going across as far as the borders are concerned is my colleague Mahindra Mahi is joining us from Chilla border. Now, things seem to be relatively calmer at the Gazipur border, as Anil was earlier highlighting. He was at the NH9 and he was showing our viewers how traffic movement is comparatively smoother at the Gazipur border when compared to the Tikri where Arzu is. Meanwhile, you're at the Chilla border. There seems to be a relative lull there as well. There was earlier, of course, a few days back, a tractor march that had taken place. What can you tell our viewers as to what can they expect regarding action around the Chilla border today? देखिए बिल्कुल जो पंजाब के किसान थे 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पे खनौरी बॉर्डर पे धरने पे बैठ गए थे और उनका कहना था कि हम MSP को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ। तो उनको वहीं जो जवानों ने जो पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्स उनको वहीं रोका। उसके बाद लगातार हंगामा था वो चलता रहा। 26 तारीख को जैसे देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा और राकेश टिकैत द्वारा, मगर उसका असर नोएडा NCR में देखने को नहीं मिला था। खास तौर पे हमने देखा था किस तरीके से, क्योंकि नोएडा से 3 बॉर्डर कनेक्ट होते हैं दिल्ली के लिए। पहला आपका कालिंदी कुंज, दूसरा DND और तीसरा चिल्ला बॉर्डर। किसानों को पहले ही समझाया गया था, किसानों को पहले एक रूट मैप बताया गया था, अगर आप ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे तो इस एरिया में निकालेंगे, इससे अगर आप आगे जाते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई थी। तो जेवर से जो किसान थे, जो संयुक्त किसान मोर्चा और जो किसान भारतीय किसान यूनियन, वो जेवर के जो किसान थे उनका कहना था कि हम यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते से महामाया फ्लाईओवर और फिर उसके बाद दिल्ली कालिंदी कुंज होकर जाएंगे। मगर जो पुलिस थी, जो पुलिस के आला अधिकारी थे, जो SDM थे, उन्होंने जेवर में ही तमाम किसानों को रोका, वहीं पर उनके ट्रैक्टर को रोका, आसपास उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला। और दूसरी तरफ नोएडा की बात करें तो नोएडा में जो किसान थे उनको भी महामाया से वापस लौटा दिया गया, यानी कि ट्रैक्टर मार्च का नोएडा में किसी तरह का कोई असर नहीं दिखा। तमाम किसान
जो नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में पिछले कई महीनों से धरने पे बैठे थे, उनकी भी कॉल थी अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती तो हम भी दिल्ली कूच करेंगे। तो मगर कहीं ना कहीं सरकार द्वारा उनके लिए एक चिट्ठी जारी की गई। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया था कि आपकी तमाम मांगों को लेकर एक हाई पावर कमेटी की हम गठन करते, जिसमें गौतम बुद्ध नगर के डीएम और मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष वो शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों को जब वो चीज मिली तो वो उन्होंने अपना धरना समाप्त किया और उनको 3 महीने की मोहलत दी। यानी कि 3 महीने तक जो नोएडा के किसान धरना दे रहे थे अलग अलग स्पॉट पे, चाहे हम नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, उन्होंने अपना धरना समाप्त किया क्योंकि वो कह रहे हैं कि सरकार ने हमसे वादा किया है, सरकार के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उन्होंने हमसे बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं जो नोएडा के किसान थे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत थी, पिछले 2.5-3 महीने से अलग अलग स्पॉट पे वो बैठे थे, मगर उन्होंने अपना धरना समाप्त किया। तो अगर आप देखेंगे तो जो अब किसानों का आंदोलन चल रहा है पंजाब के बॉर्डर पे या कहीं हरियाणा के बॉर्डर पे, वहां नोएडा का जो किसान है उसकी भागीदारी नहीं दिखी, ना उनका कोई सहयोग दिख रहा है। 26 तारीख को जरूर बंद का ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था पूरे देश भर में, मगर उसका भी असर नहीं दिखा था। नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में 50-100 ट्रैक्टर जरूर सड़कों पे आए थे, मगर वो हाईवे की तरफ नहीं थे, वो सर्विस रोड पे थे, क्योंकि पुलिस ने पहले ही उनको चेतावनी दी थी अगर आप नियम का उल्लंघन करेंगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है 2024 की बात करें तो इसका असर नोएडा एनसीआर में तो देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी देखिए संयुक्त किसान मोर्चा Indeed, द्वारा and there seems to be a relative lull even where you are standing at this point. Not too much vehicular movement, not too much traffic, not too much action on the ground where you are. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.